Am I audible to all of you? Am I audible? Am I audible to all of you? Can you type yes if I'm audible? Yeah. 1 second here. Achha. So guys, today we're going to get to the next part of our discussion and the revision of jurisprudence. And today we're going to learn about, definitely we're going to learn about the historical school. Okay, we have read about the analytical school yesterday. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे historical school. Okay, अच्छा. Any one of you having any query regarding the analytical school? You may ask. Then we can get to the historical school here. Any one of you having any query regarding the analytical school? Any one of you having any query regarding the analytical school? Nothing. So let's get into the historical school. Okay. चलो historical school में अगर हम लोग बात करेंगे ना, so yes, any query? No, Archana, yes, say. Tushar is saying no. So if we say what is the next part of it? Okay, historical school. तो historical school में सबसे important जो चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, analytical school के साथ आज हम लोग we are going to differentiate between the analytical school and historical school. So as we have seen, after the natural law school, ठीक है, natural law school के बाद there are so many different branches of school that have emerged, okay, in 17th century, 18th century, 19th century, and उसी स्कूल में से एक स्कूल आता है आपके हिस्टोरिकल स्कूल. नाउ एज द नेम सजेस्ट हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट हिस्टोरिकल स्कूल, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है इट इज कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री. ओके, हिस्टोरिकल स्कूल कहीं ना कहीं रिलेटेड टू हिस्ट्री, राइट? So as the name suggests, definitely it is related to history only. Okay, history means the past. Okay, the past that is carrying forward in the present, or that has to be followed in the present, that what we are going to talk about today. ठीक है, तो हिस्टोरिकल स्कूल का मेन जो फंडामेंटल है आपका, वो बेसिकली हिस्ट्री से आता है, पास्ट से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली देयर इज वन टर्म दैट इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल स्कूल जो हम लोग आज देखेंगे, दैट इज डेफिनेटली द कस्टम्स. ओके, that is definitely the customs. Now anybody can remember the customs definition? Custom, any rituals, rules which is being practiced time immemorial. Time immemorial, बहुत दिनों से जो प्रैक्टिस किया जा रहा है वही कस्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कस्टम्स के अगर हम लोग आज एग्जांपल ले, ठीक है, तो कस्टम्स आल्सो बीइंग नाउ पुट इनटू लॉ. ओके, तो उसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज आपके मैरिज लॉज में बहुत सारे चीज हैं. ठीक है, इवन आपके सप्तपदी. ओके, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट कैन बी गिवन के कस्टम्स कमिंग इनटू द लेजिस्लेशन. तो ये कस्टम्स जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सो देयर इज वन पार्ट दैट वी हैव सीन इन द एनालिटिकल स्कूल कि व्हाटएवर द स्टेट मेक्स दैट इज द लॉ. ओके, व्हाटएवर द स्टेट मेक्स that is the law, that is the law. Now here in case of historical school we have to be very much reliant on customs. जो customs से आ रहा है वो law बनता है. How it is going to be made law, we are going to talk about it, but so far this is the part of the historical school. Okay, so historical school में अगर हम लोग देखेंगे, historical schools basically there are two different important person in historical school. ठीक है, historical school में दो बहुत important person है जिसको jurist है, जिसको हम लोग को देखना पड़ेगा. One is Savigny and another is Henry Maine. Okay, Savigny and Henry Maine. So we are going to understand about them, Savigny and Henry Maine, and हम लोग उनके बारे में देखेंगे और समझेंगे कि ये दोनों क्या बोले हैं, and what are the theories that he has both of them have given, and what are the understanding that we are going to take from them, and what is important for our exam purpose. अच्छा, आपको एग्जाम पर्पस के लिए एक चीज तो हिस्टोरिकल स्कूल में जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, दैट इज द कस्टम पार्ट. ठीक है, तो वो आपको याद रखना ही पड़ेगा. इसमें आई डोंट नीड टू टेल यू, इट्स वेरी मच implied that custom is one of the backbone of historical school that you have to remember. Now coming to the
द मेन पार्ट ऑफ इट। ओके, हिस्टोरिकल स्कूल के कुछ मेन पार्ट आते हैं और आपके कुछ बुक्स के नाम सैविग्नी के, ठीक है, जो मैं लिखा भी हूँ आपके लिए, उसके लिए मैं एक एक करके आप लोगों के सामने बताता हूँ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बुक्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर इट। ओके, नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुक सैविग्नी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेम्बर, ये क्योंकि ऑल्टरनेट एग्जाम में आते हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेंशन दैट। ओके, सो सैविग्नी के जो बुक्स है, सैविग्नी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, so books that you have to study is definitely uh, yeah, the first is Vom. Okay, this is very very important, VOM। okay, this is very important and आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं and that's why it's important for you। okay, important Vom, ये सैविग्नी के जो वर्क है इसको याद रखना है आपको। एंड अनदर important आपको जो याद रखना पड़ेगा that is definitely the history of the Roman law in the Middle Ages. Okay, history of the Roman law in the Middle Ages. This another work that is needed. History of the Roman law in Middle Ages. So these two books that you have to make sure you have to remember this thing। ठीक है, तो सैविग्नी के बुक का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपको याद रखना है, दैट इज वॉम्बर ऑफ वन एंड सेकंड इज द हिस्ट्री ऑफ द रोमन लॉ इन मिडिल एजेस। तो ये बुक, ये वॉम्बर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद जरूर रखना। द रीजन इज वेरी सिंपल, मैं दोबारा आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्लैट पीजी में आया है। ठीक है, एक से दो बार ऑलरेडी लास्ट 3-4 सालों में, मिनिमम लास्ट 5-6 सालों में, तो इसका आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्टरनेट LL.M एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, सैविग्नी इज रिमेम्बर्ड एज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, डार्विनियन बिफोर डार्विन। ओके, ये बोला जाता है सैविग्नी के लिए। सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस एस्पेक्ट, हु इज कॉल्ड एज डार्विनियन बिफोर डार्विन। सो he is called Darwinian before Darwin। okay, Savigny। okay, so Savigny, he is the main pillar of आपके हिस्टोरिकल स्कूल। उनके दो किताब के नाम, Bomberope and History of the Roman Law in the Middle Ages, who is called the Darwin, he is also called as the Darwinian before Darwin। ठीक है, तो दिस पार्ट यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ अभी हम लोग आते हैं इसके मेन पोर्शन के ऊपर एंड हिस्टोरिकल स्कूल के सैविग्नी के जो मेन मेन पोर्शन है उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं जल्दी से जल्दी एंड जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अच्छा, नाउ सैविग्नी की जो मेन थ्योरी है दैट इज रिमेम्बर्ड एज वॉल जेस्ट। ओके, सैविग्नी की जो मेन थ्योरी है दैट इज रिमेम्बर्ड एज वॉल जेस्ट। I hope I have written, yeah, wall gist, yes, I have written, spelled it correctly। So wall gist is very much important and इसका अगर मैं ये करूं, so it is spelled like that। okay, people and spirit। okay, so if you see it, wall gist का मतलब होता है spirit of the people। okay, spirit of the people, that is the meaning of wall gist। now ये spirit of the people मतलब क्या, आप लोगों को अगर मैं पूछूं spirit of the people का मतलब क्या होता है wall gist का, what do you understand by the spirit of the people? कि कोई भी जगह में हिस्टोरिकल स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इट इज रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर सोसाइटी, वन पर्टिकुलर एक जो प्रिमिटिव एज के सोसाइटी है, वहां से हिस्टोरिकल स्कूल का जन्म होता है। ठीक है, सो इफ यू सी, if you see any society, there are some customs that we generally follow in whatever society that we go। ठीक है, आप अगर हिंदू सोसाइटी में जाओगे, एक certain kind of customs that we follow। If you go to Muslim society, there is certain kind of custom we follow। if you go to tribal society, there are certain kind of customs we follow। ठीक है, and we are talking about now recent जो सिचुएशन है उसमें। तो जितने पुराने प्रिमिटिव एजेस में जितने आप जाओगे, टाइम में पीछे जाओगे, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट द पीपल दे फॉलो कस्टम। ओके, द एंड द कस्टम
and also they follow the karta. I hope you remember the karta system in the family law, ठीक है? So family law में जो karta आता है, तो यहाँ पर भी सेम चीज आ रहा है कि whatever karta says the rest of the family will follow that, ठीक है? So the same thing is going to be followed here as well. So spirit of the people is one important aspect that you have to remember the Volgist. Now Volgist का मतलब ये है कि एक certain consciousness and the awareness of the people that everybody follows. Now कैसे मैं आपको लोगों को समझाता हूँ Volgist का मतलब क्या है. Suppose मैं एग्जांपल दूं, when right to privacy become our fundamental right. कब कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया? कब, कौन से साल में डिक्लेयर किया? when it became fundamental right? can you tell me can you tell me the year, a tentative year? कब हुआ राइट टू प्रिवेसी केस, पुटुस्वामी केस कब आया था? can anybody remember this thing? can anybody remember? नहीं? अच्छा, मैं आपको अगर मैं बताऊं, दैट इज अराउंड 2017-18 के टाइम, ठीक है? 2017-18 के टाइम केस पुटुस्वामी केस वाज decided by the court, and उस टाइम आया हम लोगों के राइट टू प्रिवेसी. नाउ व्हेन द राइट टू प्रिवेसी केम इनटू द पिक्चर, ओके, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, अब राइट टू प्रिवेसी हम लोग के फंडामेंटल राइट के हिसाब से घोषित किया गया. अच्छा, बहुत बढ़िया. नाउ इफ यू सी, when the right to privacy came into our picture, okay, came into as our fundamental right, it incorporated in article 21. बहुत अच्छा. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोबाइल फोन तो हम लोग के पास बहुत पहले से था, राइट? वी, आप 2010 की बात करो, ठीक है? 2010, थिंक अबाउट द 2010. 2010. नाउ 2010 में प्रोबेबली आप अगर यूएसए चेक करोगे और इंडिया चेक करोगे, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. आप बोलोगे सर ये तो एडवांस सोसाइटी है, हम लोग वी आर डेवलपिंग कंट्री. या ट्रू, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू. ओके, सो whatever the law is coming here, ठीक है, even the right to privacy, if you go and check back in 2010 USA, you might find right to privacy laws there in 2010 itself, because of their advanced nature, because of the awareness of the people, because of the advanced awareness of the society, because of the spirit of the people of USA, you will get there. Okay, just to give you the example, whereas in India in 2010 हम लोग को right to privacy वाला आया ही नहीं, अवेयरनेस हम लोग के दिमाग में आता ही नहीं था कि हाँ देयर इज आधार कार्ड, उससे डेटा ब्रीच हो सकता है, देयर इज ए रिजर्वर ऑफ डेटा दैट इज देयर. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट इन 2023, दैट इन द रिसेंट कुछ हफ्तों में वी जस्ट गॉट टू सी, एक न्यूज आया था कि देयर इज अ ह्यूज डेटा ब्रीच, 81 करोड़ पीपल समथिंग उनके डेटा ब्रीच हुआ. आई डोंट नो कि मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस और नॉट. आई होप सम ऑफ यू माइट बी अवेयर अबाउट इट. ठीक है, तो हम लोग 2023 2022 में जितना अवेयर है, बाकी कोई एडवांस सोसाइटी बहुत पहले ही शायद डेटा के बारे में उतना अवेयर थे. ठीक है, वी आर बिकमिंग अवेयर lately, but as per we are becoming aware, our laws are getting implemented as per that awareness. ठीक है, so that what I mean to say, spirit of the people in that sense. ठीक है, तो जब तक आपके अवेयरनेस नहीं आएंगे, आपके लॉ भी उस हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है. गॉट इट? So that is the spirit of the people. Okay, understood? Tushar, Archana, got it? Got it? Yes, sir. Understood? अच्छा, so this is the part of it. Now वॉल जिस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दिस पार्ट हिस्टोरिकल स्कूल के द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू not only the wall gist, law is like a language. Okay, law is like a language. Okay, the reason being हिस्टोरिकल स्कूल का मानना ये था कि लॉ का ना एक अलग डिफरेंट ओरिजिन है डिफरेंट जगह के. ओके, सो दैट्स व्हाई इनका जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड पर से. ओके, सो the importance of this aspect is you have to understand कि law का, जैसे if you see about the language,
कि लैंग्वेज हर जगह के जो डायलेक्ट है दैट इज टोटली डिफरेंट एज पर द डिफरेंट एरिया, राइट? सो इन दैट केस लॉ का भी जो आपके अंडरस्टैंडिंग है, लॉ का भी जो आपके डिफरेंट एरिया के लॉज, ओके, आप अगर कोई भी कंट्री में जाओगे या कोई भी डिफरेंट प्लेसेस यू गो, ठीक है, लॉ का भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में यू विल गेट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ माइट बी एज पर द डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है? तो इनके हिसाब से लॉ का जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज टोटली डिफरेंट ऑल टुगेदर, ओके? अच्छा, नाउ ये आपके सैलरी का जो पार्ट है, ठीक है, मोर और लेस इन रिलेशन टू दिस, हम लोगों को ज्यादा कुछ इसमें अगर आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रिवाइज करने जाओगे तो मोर और लेस यू हैव डन इट, ओके? बट आपको जो चीज जानना है ये वाला पार्ट हो सकता है, ठीक है? अभी आते हैं हेनरी मेन में, ठीक है? सो हेनरी मेन इज दैट पार्ट, ओके? हेनरी मेन का आपका सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, ओके, development of the law. Henry Maine is the guy who talks about the development of the law. Okay, development of the law means, okay, Henry Maine is the guy who talks about the development of the law. Development of the law, there are 7 stages of development that what Henry Maine talked about. Now, Henry Maine is one of that jurist who is very famous and who is very famous in relation to his research, because he has traveled to various places throughout the different countries, and then he came together with the research and he said कि यहाँ पर लॉ का जो डेवलपमेंट होता है हिस्टोरिकल स्कूल या हिस्ट्री में वो बहुत अलग है, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू दिस, ठीक है? तो क्या क्या चीज हम लोग को देखना पड़ेगा डेवलपमेंट ऑफ लॉ में, ठीक है? पहला चीज आपको देखना पड़ेगा, एक, द लॉ इज कमिंग फ्रॉम द गॉड, ओके? लॉ इज कमिंग फ्रॉम द गॉड, दैट इज द वन पार्ट. कैन यू रिमेंबर पीपल, आर यू रिमेंबर द फर्स्ट 4 स्टेजेस? एक आता है एक स्टैटिक, first 4 stages, anybody can remember first 4 stages? याद आ रहा है कुछ? anything you can remember this first 4 stages of the law development of the law, first 4 stages, कुछ याद आ रहा है? anything या कुछ नहीं याद आ रहा है? nothing, you're not able to remember anything? I hope you can, definitely कुछ तो याद रहेगा जी. First 4 stages, 2 customaries, yeah, definitely 2 customary. What is the third one? The first one is coming from the god, okay, or the king. Divine law, customary law, priestly law, and codification. Oh, that's awesome. That's awesome. 3 is priestly class, yeah. And what is the fourth one? Archana, you were saying? Codification. Codification, right? So we can understand and we can just delve into that कि law, first development of law का जो पहला 4 stages है ये आता है, law is the kind of command or law is coming from the king via divine inspiration, ठीक है? ये आता है डिवाइन इंस्पिरेशन से आपके लॉ के जन्म होता है, ठीक है, वाया किंग. Second, what is the second? Customary laws. So customary laws is very simple, as I told you, as there are certain group of people, okay, and king is basically ruling one particular region, and then in that region one custom is set and one laws are being and one rules are being set, and dhire dhire that is coming or passing from generation to generation. That's where the customary laws coming into the picture. And after the customary laws, there are fourth place and the third, sorry, there are third, there is a priestly class. Priestly class is that class आप ये बता सकते हो तो church, okay, churches are the main important propagator here, okay, who are basically dealing with the development of the law, okay, priestly class. The fourth one is nothing but the important aspect of codification, okay? Codification matlab when they got to see there are certain kind of
चेंजेस और मैनिपुलेशन, क्योंकि आप अगर देखोगे, जस्ट गिविंग यू द कोडिफिकेशन पार्ट, ओके, द कोडिफिकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? आप अगर देखोगे ऑल ओवर इंडिया में, ओके, वी फॉलो, अगर हिंदू मैरिज लॉज तो फॉलो करते हैं, ठीक है, बट इफ यू सी द रिचुअल्स ऑफ द मैरिज, if you see the rituals of the marriage in all over India, though all belong to Hindu, okay, community, their marriages जो rituals है, that's quite different, okay, as per their different जो भी है community, उस हिसाब से different होते हैं, okay. Now what I mean to say is that, okay, even आप उतने कंट्री के मत लो, आपके एरिया, आपके आसपास के नेबरहुड में, इफ देर आर 30 फैमिलीज, 30 फैमिलीज का अलग अलग रिचुअल क्रिएट होता है फॉर मैरिजेस, ओके, एंड यू विल से यस सर, ठीक है, इट्स डेफिनेटली इज गोइंग टू बी देयर, राइट? Yes, Tushar, I'll get to that. Okay, conceptual law is found, not made. Yeah. So, priestly class के बाद कोडिफिकेशन, व्हाई कोडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि हर जगह के डिफरेंट पार्ट जो है, ओके, दैट हैज टू बी कोडिफाइड। अगर कोई नॉर्मल प्रॉपर सिस्टम नहीं रहेगा, इफ यू थिंक कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है आज कोई, ठीक है, आर्टिकल 21 है कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, दैट हैज टू बी कोडिफाइड टू गिव यू सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन द लॉ, ठीक है, दैट्स व्हाई कोडिफिकेशन इज वन ऑफ द पार्ट इन लॉ that is very important, okay. So ये रहा fourth part, okay. Now what is the fifth part? What is the fifth part? And all those things belong to static class, okay, static society, sorry, all those things belong to static society, okay, all those things belong to static society. Now the what is the next? And after the static society, if any society is getting developed to the, okay, next stages, then there are फिफ्थ स्टेज होता है लीगल फिक्शन, ओके, लीगल फिक्शन होता है फिफ्थ स्टेज, ओके। सिक्स स्टेज इज नथिंग बट आपके इक्विटी, ओके, एंड सेवेंथ स्टेज इज नथिंग बट लेजिस्लेशन, ओके, सेवेंथ स्टेज इज नथिंग बट लेजिस्लेशन। ना अगर आप देखोगे इस पूरे चीज को, ओके, पूरे चीज को अगर आप देखोगे, तो देयर आर सेवन स्टेजेस, एंड इफ आई गेट टू द वन पार्ट, and these particular seven stages are one very important aspect from the legal point of view. How? Like this is one part is very much associated with the natural law, okay. Now coming into the bit of, मैं आप ज्यादा explain करना नहीं चाहता हूं, ठीक है, as it's a revision one. So this is the natural law. Then next part is the customary laws. Customary laws is where the आपके हिस्टोरिकल स्कूल को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड इज प्रिस्टली क्लास, ये भी नेचुरल लॉ में आपको देखने के लिए मिलेगा एंशिएंट पीरियड में, ओके। थॉमस एक्विनस, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक श्योर, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस थिंग, थॉमस एक्विनस से आप इसको याद रख सकते हो, ओके। बोले सर आप तो याद नहीं है, इससे तो और भूल जाएंगे, ठीक है। एंड कोडिफिकेशन इज एनी पार्ट विच इज गेटिंग कोडिफाइड। नाउ लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन, these all are for developed society. Legal fiction, equity and legislation and equity you can very well understand. Equity is the larger principle regarding the equality, so that's not the important thing. For legislation equally, कि आप हम लोग जो legislation देखते हैं, that is the last part of the law that we can see in development stage. Legislation तो लॉ का किंग से स्टार्ट होता है फ्रॉम द डिवाइन इंस्पिरेशन, खत्म होता है लेजिस्लेशन में, दैट इज इन रिलेशन टू आपके दिस पार्ट दैट वी गेट टू सी द डेवलपमेंट स्टेज में, ये खत्म होता है आपके 7 पार्ट में, ओके। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम लोग जाते हैं, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ काम है और आपके जो वर्क है, ये थोड़ा देखते हैं हेनरी मैन के, ठीक है। हेनरी मैन के जो वर्क है, जो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव पे, दैट इज एंशिएंट लॉ, ओके। एंशिएंट लॉ इज वन ऑफ द वर्क दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंशिएंट लॉ one part is very important आपके ancient law and village communities, these two part is very important, okay.
ये आपके बुक्स आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, दिस थिंग, हेनरी मैन के दिस पार्ट, ठीक है। तो हेनरी मैन के ये दोनों पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, 7 स्टेजेस ऑफ द लॉ, ठीक है। एंड आपके जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल में। हिस्टोरिकल स्कूल का नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लॉ इज टू बी फाउंड नॉट मेड, राइट? एम आई राइट तुषार? लॉ इज टू बी फाउंड नॉट मेड। नाउ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, लॉ इज टू बी फाउंड नॉट मेड, या yes, मैं आपको बोल रहा हूँ हाउ वी कनेक्ट विद द मेन हेनरी मेन व्यूज, तुषार आई एम जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू, ओके। Law is to be found not made. Now law is to be found not made. Now if you see, as per the historical school, there are 7 stages of law, okay, 7 stages, okay, 7 stages of law, and 7 stages of law में अगर आप देखोगे, one very important aspect, okay, one very important aspect is आपके first from the king, all right, king, then customary law, then आपके priestly class, and then fourth is codification. Now अगर आप इस सारे चीज को देखोगे, okay, सारे चीज को देखोगे, each and everything, सपोज आप हिंदू मैरिज लॉ की बात करो आज, okay, if you talk about the Hindu marriage law, now if we talk about the Hindu marriage law, then one important aspect is that law is to be found not made, and it is in relation to अगर one of the major difference between the historical school and the analytical school, historical school and the analytical school, क्यों ये दोनों में major difference है, ठीक है। मेजर डिफरेंस इसलिए है, ठीक है, मेजर डिफरेंस इसलिए है कि हिस्टोरिकल स्कूल में कस्टम से लॉ बनता है, ठीक है। द लॉ इज द सोर्स ऑफ द लॉ इज द कस्टम, सो if one of the custom is getting prevalent, there is a higher chance that custom will turn into law or will become law. That's why it is to be found, okay. Now whereas for the analytical school, in the analytical school, the important concept is that, okay, law is to be made, and if law is to be made, okay, then sovereign is making the law. So law here, as per the analytical school, sovereign is making the command of the sovereign. Yes, Archana, you are right, law is the command of the sovereign, and that's why it is bit different than from the historical school. In historical school we found law in customs. In analytical school, law is the volition and the command of the sovereign. So that's why one is where law is made and one is where law is found. That's the basic understanding. Now, अभी तुषार ने एक सवाल किया, सर ये लॉज टू बी फाउंड एंड नॉट मेड, इसको कैसे हम लोग इसके साथ देखेंगे हेनरी मेन के साथ। अब हेनरी मेन में अगर आप देखोगे, ठीक है, हेनरी मेन में अगर आप देखोगे 7 स्टेजेस ऑफ लॉ, सो हेनरी मेन का वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कोई भी सोसाइटी में उठाओगे ऑल ओवर कंट्री, ओके, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में, एज ही हैज रिसर्च इन ऑल ओवर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके वो रिसर्च किए थे, तो आप कोई भी कंट्री में उठाओगे फ्रॉम द प्रिमिटिव स्टेज टू द डेवलप्ड स्टेज, देयर आर 7 स्टेजेस, ओके। एंड आप डेवलप स्टेज में अगर जब कोई भी लॉ के लेजिस्लेशन में देखोगे, ओके, that has some kind of source or relation with this 1 or 2 or 3 part as well. So as per the Henry Main, हम लोग जो लेजिस्लेशन देखते हैं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन एक फर्स्ट 4 स्टेजेस के साथ कहीं ना कहीं रहता है कि इधर कस्टम से वो लेजिस्लेशन बन रहा है या किंग that particular percolation of ideas and the rules and the regulation and the rituals from different stages and coming to the legislation, वो आपको मिलेगा ही पुराने different पुराने stages में, and that's why it's very important for you, very important for all of you
टू अंडरस्टैंड कि हेनरी में जो 7 स्टेजेस बोला है, दैट इज इन रिलेशन टू also law is to be found not met. Okay, law is to be found not met. Okay, understood, Tushar? Got it? Got it? Okay, so this part you have to remember this very important thing. Sir, there are criticism in every school. Is it important? Yeah, Archana, criticism is important. Aisa nahi ki criticism is not important. Okay, but one important aspect that you have to learn here, okay, certain part to it, that the certain part to it that you have to remember in relation to this, कि आपके जो क्रिटिसिजम्स आ रहे हैं, जैसे हिस्टोरिकल स्कूल के क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल स्कूल्स के क्रिटिसिजम्स में अगर आप जाओगे, हिस्टोरिकल स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म से दे डोंट थिंक मच अबाउट द सॉवरेन, they think that all the things are coming from the customs, which is not true actually, ठीक है? So the custom that is the part, is going to play the major role. True, custom is important, but that doesn't mean sovereign is not going to make any law, right? So that is one kind of criticism that you can attach to historical school. Okay, समझ आया? Got it? Okay, now coming to the next part. Okay, coming to the next part. Static society and progressive society. Static society and progressive society. Okay, I'm going bit fast. The reason being, as it's a, I'm just here to make you revise the things. Okay, and that's why I'm just going. If you want to explain anything, if you want me to explain anything, I'll explain anything. Okay, that's not a problem. अगर आपको कुछ query है तो जरूर मुझे बताना. Okay, अच्छा. Now the next important part that you have to understand, that is relation to static society and progressive society. Now, static society, as per the Henry Main, the static society are those societies which is stagnant, और उनके development first 4 stages तक ही हुआ है. Now, what is the first 4 stages? The first 4 stages is definitely the king that you said. The second is the customary laws, okay, and third is the priestly class, and the fourth one is definitely the codification. Now this codification and the other codification is bit different. I'm going to make you explain that. So this is the static society. If any society which is being developed from the king's era to the codification, then this is the static society. Now progressive society is going to go far than this. Now how far? Now next is the legal fiction. Okay, sixth one is आपके legal fiction. Okay, sixth one is equity, and the seventh one is the legislation, right? Now अगर आपको static society और progressive society में जो main difference आता है, ठीक है? Now this society is more or less related to the primitive societies. Okay, the primitive societies that we are talking about. Now, in the primitive societies, what is the main important aspect? Suppose, getting back to the king's era, where the king is there, king is ruling the country, okay, and king is making the laws, and what king is saying, all the laws I am making by the divine command or divine inspiration. तो उससे मेरा law बन रहा है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? तो law उससे बन रहा है आपका. Now the next important part is that the next part is coming from whatever the law is being made or being said or conveyed by the king, वो customary, वो धीरे धीरे generation to generation customs में जा रहा है, ठीक है? How it is getting into, or how the people are understanding or taking it, and from generation to generation,
आप बता सकते हो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कर्ता। ओके ओके, कर्ता ऑफ द फैमिली। सो वन फैमिली, अगर आपके फैमिली में जो कर्ता है, ओके, whatever he is following or she is following, more or less the rest of the family member are going to follow that, otherwise someone is going to be creating backlash or something, वो अलग चीज है, but customary laws ऐसे follow होता है। now karta is playing very important role in the customary laws from one generation to another generation. And third one is the priestly class. Priestly class is why important? Priestly class is important relation to आपके एक ही important major factor, that is when there is no king, because there is one part के king के बाद society में बहुत uproar create हो रहा था, and when there is no king, one particular class that tried to hold the nerve of the society, and that is priestly class, the churches. Okay, तो चर्च वहां पर उनके जो डिवाइन कमांड्स थे किंग्स के, उसको उनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से दोबारा इंटरप्रेट करने की कोशिश किए, एंड दे मेड द लॉ इन दैट वे। ओके, सो कहीं ना कहीं लॉ में प्रीस्टली क्लास के एरा में ऑल द एस्पेक्ट्स वर देयर, लॉ एंड रिलीजन कहीं ना कहीं मिक्सअप हो गए। ठीक है, लॉ एंड रिलीजन, ओके, लॉ टिंज विथ रिलीजन। And then the next part is the codification. Next part is the codification. That part is another important aspect. Now, a codification is a bit different than the codification that we see nowadays. Why? This codification is kind of Hammurabi's code. I don't know how many of you remember the history. Okay, Hammurabi's code is one of the definition of it. So if you see the Hammurabi's code, there are 10 guidelines. Now, suppose आपको मैं अगर बोलूं कि हम्मुराबी कोड में लिखा गया है कि चोरी करने से पनिशमेंट दिया जाएगा, दैट्स इट। ओके, दैट्स द Hammurabi code mentioned, and that's how from the priestly class they started creating some kind of scriptures or some kind of code out of that. Okay, that code I'm talking, where certain ethical moral aspect has been written. Suppose it's written, okay, कि चोरी करना पाप है, तो Hammurabi's code it's written like that. Now these four stages belong to the static society. Now after these four stages, when you get to the legal fiction, equity and legislation, the next part coming to the picture. Now what is the next part? अब Hammurabi's code में लिखा हुआ है कि चोरी करना पाप है, right? Now next part, as the society is developing, suppose one of the अब सोसाइटी इज गेटिंग डेवलप्ड फ्रॉम द स्टैटिक सोसाइटी टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब जब स्टैटिक सोसाइटी में बोला गया, सोसाइटी में हम्मुराबी's कोड है, एंड द इन द हम्मुराबी's कोड देयर इज ए टर्म और देयर इज ए कोड रिलेशन टू दैट, द रूल इज देयर कि यू कांट रियली स्टील, एंड स्टीलिंग इज अ सीन। ओके, तो ये चीज लिखा गया है। अब एज द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, सपोज प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में, ठीक है, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट इमर्ज फ्रॉम इट। हाउ द सर्टेन एस्पेक्ट इज इमर्ज? आप देख सकते हो कि कुछ सपोज देयर इज टू डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसमैन, ओके, दे आर ट्रांजैक्टिंग। ओके, तो एक बिजनेसमैन आ रहा है, ओके, one businessman and another businessman, two different kind of businessmen who are transact in the progressive society. Now here, suppose there is contract or there is some kind of conversation and there is some kind of promise, okay, but there is some kind of betrayal of the promise by one person, okay, betrayal of the promise, कितना बोला गया था वो नहीं किया। Now Hammurabi's code is really not able to protect that thing, right, as per the exact text, क्योंकि टेक्स्ट तो ये बोलता है कि चोरी करना पाप है, दैट्स व्हाट Hammurabi's code said, बट सोसाइटी इज सो प्रोग्रेसिव। अब सोसाइटी में दोनों बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एंड वन बिजनेसमैन इज ट्राइंग टू बिट्रे और हैज बिट्रेड इन द ट्रांजैक्शन, तब Hammurabi's code is no good,
बट हम्मुराबी's कोड को रख के हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं कि इफ वन पार्टी हैज बिट्रेड or hasn't fulfilled the promise, then he has to or she has to suffer some kind of punishment or something like this. Okay, but Hammurabi's code को as per the recent transaction legal fiction में उसको change किया गया. That is the part of the legal fiction. Legal fiction is nothing else. The law remains the same. Law remains the same. और जो ब्लैक लेटर ऑफ द लॉ रिमेन्स द सेम, बट उसका एप्लीकेशन डिफरेंट जगह में होगा. समझ पाए आप तुषार, अर्चना? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? सो गॉट इट या डिडंट गेट इट? गेट इट? सो this part is, that's how the legal fiction. Now legal fiction के बाद आपके next part आता है equity. Equity में क्या है? Equity में the another part is there. Equity में next part के as the society is getting developed, हम लोग जॉन रॉल्स के टाइम पढ़े थे कि we are talking about the equality. Okay, so here in this case equity is one of the principle that is getting emerged in the historical school, or they started thinking कि नहीं, लोगों में इक्वलिटी होना चाहिए. ठीक है, as the people are understanding about their right, people are understanding about their duties, okay, impliedly, and that's where the equity principle coming into the picture. It is all the progressive society's part, okay, and that equity is there, then legislation is also going to be coming to the picture. Now equity may another very important part is there. Equity is the next step of the legal fiction, where certain aspect is more written for different public. Like लीगल फिक्शन में एक चीज बोला गया था हम्मुराबी's कोड से कि स्टीलिंग इज अ sin, हो गया. अब इन इक्विटी now it is getting clearer in what aspect in business there is certain principle that has to be followed, in societal aspects certain principles have to be followed, okay, and that's where the different kind of principles are getting emerged. That is the part of the equity. Okay, and in equity, from equity to legislation, the next important aspect is very simple. That is, now as different branches or different domain of the society getting different principles, बिजनेस में एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है, सोसाइटी में एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल फॉलो कर रहा है, हम लोग आसपास रह रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं ईस्टबेंड का अलग सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहा है, तो उसका जो लेजिस्लेशन क्रिएट करना है, दैट इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ एनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, कि हम लोग डिफरेंट जगह में रह रहे हैं, उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स लेट डाउन हो रहे थे इक्विटी स्टेज में, एंड लेजिस्लेशन में उसी प्रिंसिपल जो लेट डाउन हो रहा था उसको हम लोग लास्ट में लेजिस्लेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो दैट इज द होल स्टेजेस फ्रॉम द स्टैटिक सोसाइटी टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी. ओके, नाउ ये जो पार्ट है आपके स्टैटिक सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू योर एग्जाम एज वेल. ओके, now any query that you want to ask, Archana, Tushar? Any query that you want to ask? Anything that you want to ask? Any query that you want to ask, guys? Okay, अच्छा. Now this is the overall thing. Now आपके अभी जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल में डिफरेंस क्या है. ठीक है, अच्छा. अच्छा सर, सो ऑल दिस डेवलपमेंट्स वर ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल स्कूल. नो, हिस्टोरिकल स्कूल में डेवलपमेंट बोलना ये गलत होगा, अर्चना. What Henry Wayne thought it in this time period and how the law is developed, in this way law is developed. Okay, all this development नहीं, डेवलपमेंट ऑफ लॉ अगर आपको देखना होगा, देन आपको देखना होगा हेनरी वेन जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ की बात किया है. Okay, this aspect that you have to understand. Okay, that's all. अभी आपको मैं बेसिक चीज में आता हूं, एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल में मेन डिफरेंस. ठीक है, एनालिटिकल स्कूल
और हिस्टोरिकल स्कूल में मेन डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ एनालिटिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल। अगर आप एनालिटिकल स्कूल देखोगे और हिस्टोरिकल स्कूल देखोगे, उसमें जो डिफरेंस है क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्योंकि एक है एनालिटिकल स्कूल व्हिच इज सेइंग analytical school is saying law is coming from the sovereign. Law is the source of law is sovereign. Okay. Whereas historical schools talks about source of law is custom. Here, law is made. Here, law is found. Here, international law doesn't find any place. Does not find any place. Here, international law plays important role. Plays important role. Okay. Okay. So this is the another aspect to it that is there. Okay. Acha. Everybody understood? Tell me one or two other difference. और कुछ difference बताओ तुषार अर्चना. Tell me one or two difference. The difference that you can see in the historical school and analytical school. Sir, in historical school, law is independent of political authority. Historical school, sorry, could not get you. Tell me again. Law is? Law is independent of political authority. Yes, yes. Law is independent of political authority. True. Kind of, you can say it. Whereas in analytical school, law is there, talking about law is coming from the sovereign. अच्छा, okay. कोई और दूसरा बताओ. और बताओ. और कुछ और भी है Sir, ऐसा while, तो नहीं है. while interpreting any statute, the judges they should take into consideration that is the history. I don't In get regards to started. interpretation of the statute, judges have to consider the history. History. अच्छा, you are talking in support of the historical school. Yes, sir. अच्छा, okay, okay. But how that is different from the analytical school then? अच्छा, तुषार is saying something. देखता हूँ मैं तुषार क्या बोल रहा है. Confused. No, that's what I'm saying ना कि this part is there. Okay, तो आपके जो interpretation of statutes that you said it's not relevant here. ठीक है, that you said. There might be any difference, but आप जो बोलना चाह रहे हो उससे तो कुछ relevance नहीं आ रहा है किसी भी साइड से. Yeah. Okay. अच्छा, और कुछ query? Anything? Anything regarding that analytical school, historical school? If you follow any book, you will get to see that. ठीक है, आपको और ज्यादा कुछ इधर important जो चीजें एक बार मैं देख लेता हूँ. Volgested और अच्छा,
नहीं और तो मुझे कुछ नॉट ये नॉट रियली मोरलेस अच्छा एनीथिंग Yeah. So the concept of pattern families came from customer address. Yeah, pattern families coming from sir, in analytical school takes granted the development of legal. Means yeah, in Archana you are right. In analytical school it takes, but they take it for granted for development of legal system because in analytical school is bit advanced, whereas the historical school is talking about the history. Okay, so that's why in analytical school they talk about the present law as it is, right? They talk about the law as it is. In the historical school, it doesn't talk like that. Concept of pattern families came from the customary law. Yeah, definitely. Pattern family is coming from the customary law. It's one of the important concept here. ठीक है? Pattern families. आपके इसमें yeah. Historical school में yeah. अच्छा कुछ important part है जो मुझे बोलना चाहिए यहाँ पर तो I've tried to do as small as possible so that कि आप ये important चीज आप एक बार देख के जाओ आपके हो जाएगा उस हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ I don't want to get into too much detail of the things here क्योंकि बहुत डिटेल में जाने से ना क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाउ हम लोग एक एक चीज ही शायद 1.5 घंटे 2 घंटे एक्सप्लेन किए थे तुषार राइट हम लोग तो मतलब यस हैविंग नीड टू राइट और हम लोग इसको ना मतलब बहुत सारी चीज को एक जगह पढ़ रहे हैं कि ये चीज छूटना नहीं चाहिए दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्लास कि ये सारा चीज आप मत छोड़ोगे they're relying they're not yes Archana you are just घुमा फिरा के आप वहीं पर ही आ रहे हो या नहीं और कुछ ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है in historical school yeah more or less historical school yeah yeah more or less done yeah more or less done yeah you can remember this thing though it's not Savigny or Henry Main okay but you can remember this thing because this also asked एग्जाम में ठीक है इसको आप याद रख सकते हो हु इज द ऑथर ऑफ स्पिरिट ऑफ द लॉज या स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू या who is the author of the spirit of the laws this is important and आपके ये चीज पूछे जा सकते हैं आपको या और कुछ बचा हुआ है मुझे नहीं लगता है एडमंड बर्ग नहीं बर्ग से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं हार्डर नहीं है जोसेफ सेलिंग नहीं है इंपॉर्टेंट जीआरके नहीं है जीआरके इज नॉट इम्पोर्टेंट yeah the another important thing that you can remember ये तो Montesquieu है spirit of the laws the causa instrumentalis and causa principles yeah causa instrumentalis instru and causa principles concept are given by the puchta that's only thing that you have to remember causa principles given by puchta sorry yeah ये कॉन्सेप्ट पूछता ने दिया था स्पिरिट ऑफ द लॉज मोंटेस्क्यू के साथ रिलेटेड है ये दोनों चीज आपको पढ़ना है बाकी मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है नहीं नथिंग या मुझे और तो कुछ नहीं दिख रहा है मोरलेस एनी क्वेरी दैट यू हैव एनी क्वेरी कुछ है
Aratrika here is asking, sir, what topics can be important for jurisprudence this year? Aratrika, I'm going to explain this thing. Okay. So मैं धीरे धीरे वही चीज जो important है वही mention करने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके. Okay. Thank you for asking. I'll make sure to मतलब make a video on this as well. Yeah, definitely. Okay. Acha. Any other query, guys? Any other query? Any other query? Otherwise, we're going to end it here. We're not going to, because historical school is done. We're going to meet again, talk about another different school. Okay. Thank you, all of you. Have a great day.